Hare Krishna, Prabhuji. Namayo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namayo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesho Shunyavadi Pasatu Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesho Shunyavadi Pasatu Deshatarine Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayo Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraj Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jayo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jayo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Jayo Prabhupada Jayo Srila Prabhupada Jayo Jayo Prabhupada Jayo Srila Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol
Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, Yes, unmute yourself. unmute the microphone is a good idea. Yes. Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvisesa Sunyavadi, Paskacha Desatarine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Swasi Gaura Bhaktavinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you all for coming. This is a beautiful association here. Welcome to Sridan Mayapur. What else? Just 1 minute left. Okay. Today we have an interesting podcast topic. And everybody comes to this position sometime in their life, many times in their lives, including our great devotee Arjuna in the battlefield of Kurukshetra. He was in dilemma. He was, of course, his dilemma is not as much as our dilemma, but he was in a difficult situation, choosing between what to do and not to do. So the podcast is Heart's Calling, Mind's Wings. How to know the difference, discerning the true voice within. This is a very interesting topic. Yes. Keshavi Subangi Devidasi. You ready? ओके यस हरे कृष्णा Hari ओके Bol. तो आज का जो टॉपिक है हार्ट्स कॉलिंग माइंड स्विंग्स हाउ टू नो डिफरेंस डिसर्निंग द टू वॉइस विद इन। तो इसमें इस टॉपिक में प्रभु जी हमें ये बता रहे हैं कि हमें हमारे लाइफ में हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा समय आता है कि जिसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते थे, समझ नहीं पाते क्या सही है क्या गलत है। तो अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, कुरुक्षेत्र के युद्ध का जो समय था कि क्या करना है क्या नहीं। तो उनकी तरह तो एकदम हम युद्ध का समय नहीं है, लेकिन जैसे वो कंफ्यूज हुए थे क्या सही है क्या गलत है, वैसे हमारी लाइफ में बहुत बार ये फेज आता है। यस प्रभु जी। Okay. Now, so the introduction here is about the inner conflict. And it seems like we always go through this process of conflict because we have here it says here we have deep, steady, and meaningful instincts, and we have also restless, emotional, and change instincts. This desire of changing, this the mind, and you have the heart. You see, pulling one way, the mind pulling another way. So the mind is flickering, is impulsive, and the heart, when it's purified by bhakti, is connected to the super soul, is getting instruction from the super soul, the Lord within. ओके तो अभी प्रभु जी बता रहे कि अभी इंट्रोडक्शन जो हम करेंगे इस टॉपिक से, तो उसका ये है कि हमारे जो अंदर हमारे मन में हृदय में हमारे जो अंदर ही अंदर एक जो लड़ाई चलती रहती है, उसको हम कैसे समझेंगे कि उसका एक जो प्रोसेस एक जो प्रक्रिया है वो हमारे अंदर ही हमेशा वो चीज चलती रहती है। और हमारे जो इच्छा जो है, हमारी इच्छा शक्ति कभी वो इधर चली जाती है, कभी हमारी इच्छा यहाँ जाती है, कभी वहां जाती है, हमारे मन को बार बार इस ओर से लेके उस ओर हमेशा खींचती रहती है। लेकिन जब हम हमारे हृदय को हम जब शुद्ध करते हैं भक्ति सेवा में लगा के, तब वो क्या सही है वो हमें हमारे भगवान के थ्रू जो सुपर सोल है, जो भगवान है, वहां से हमें पता चलता है कि क्या चीज सही है। यस प्रभु जी। So, first, I want to congratulate all of you that here we're learning there is a mind that we're supposed to control, or at least we're supposed to know what is the action of the mind within our life. We should know the enemy.
And we have here, we have here in the Bhagavad Gita 634, Prabhupada say the mind is restless, turbulent, obstinate, very strong. Anybody can corroborate that part with me. The mind, he made up his mind. So he goes without, restraint. So congratulations, all of you. Of the 1,000 people, one of you come and start awakening up the mind process and how to look for it and control it. ओके, तो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आज हम यहाँ पे जो जान रहे हैं उन सबके लिए प्रभु जी सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई देना चाहते हैं कि उन हजारों लोगों में से तुम उस एक में से चुन के आए हो जो इस चीज को समझोगे यहाँ पे कि हमारा जो मन है वो हमें किस तरह से यहाँ से वहां भगाता है और उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो भगवत गीता में भी ये बताया गया है कि 6.34 में कि माइंड कितना हमारा जो मन है वो कितना रेस्टलेस है, मतलब वो रेस्ट ही नहीं करता, कभी यहाँ कभी वहां जाता है, और वो कितना स्ट्रांग है। और माइंड हमारा, और उसकी कभी कभी कुछ ऐसे एक्शंस हो जाती है जिस वजह से वो हमारा दुश्मन भी बन जाता है। तो उस बारे में और आगे बात करेंगे। यस प्रभु जी। So, Srila Prabhupada said in the Bhagavad Gita, this beautiful book, Bhagavad Gita, he said, the mind can be your worst enemy if it's not controlled, or can be your greatest friend if you got under control. It's like you have a horse and you know how to control the horse. You can do wonderful work with the horse, go many places, use properly. And if you cannot control the horse, you can do like me one time. When I was a kid, I was in the horse and fell head on in the floor. And it was a whole drama. It was a whole drama, yes. But horse was not controlled. And probably I deserve it because I was whipping the horse like a jockey, I tried to show off to myself because where I was nobody there. So the thing is, the mind can play tricks on you. So we have to be in the lookout. What are the tricks of mind? Which we're going to go discuss a little bit ahead of this conversation. तो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे कि श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता में यहाँ पे हमें जो सबसे बेहतरीन बुक है भगवत गीता, उसमें बताया है कि हमारा मन जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। अगर हम उसे नहीं समझते, अगर हम उसे नहीं कंट्रोल में लाते, और इसी का उल्टा है, अगर हम उसे समझ लेते हैं तो वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है। जैसे कि प्रभु जी ने यहाँ पे एक उदाहरण बताया कि जैसे घोड़ा होता है, जो घोड़े की हम जब सवारी करते हैं, अगर हमें पता है कि हमें उसके किस तरीके से उसका उपयोग करना है, कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको कंट्रोल में लाना है, तो वो अच्छा है। तब हम उसका यूज भी कर सकते हैं, उपयोग कि यहाँ वहाँ कोई जगह पर जाना है, अलग अलग जगह पर हम उसका यूज कर सकते हैं। अगर यही हमें अगर नहीं पता है कि घोड़े को किस तरीके से कंट्रोल में लाना है, कैसे चलाना है, तो वही हमें कुछ अलग ही एक्सपीरियंस देगा। जैसे प्रभु जी ने अपने बचपन का बताया कि जब छोटे थे प्रभु जी, तब उन्होंने हॉर्स राइडिंग की थी, तो वो उन्हें नहीं पता कि कैसे क्या करना है, तो वो गिर गए थे और बहुत कुछ एक अलग ही सीन क्रिएट हो गया था, ऐसा कुछ। तो अभी हमें ये चीज को समझना होगा कि हमारा जो मन है हमारे साथ कैसे कुछ चीजें खेलता है। लाइक ट्रिक, प्रभु जी जो नाम यूज किया है कि वो हमारे साथ कैसे ट्रिक्स यूज करता है, कैसे खेलता है हमारे साथ, तो हमें इस चीज को समझना होगा। यस प्रभु जी। See, the Bhagavad Gita 6, chapter 6, verse 5, the Lord, again, I'm quoting the verse fully, for him who has conquered the mind is the best of friends. But for the one who failed to do so, the mind will be the greatest enemy. So when the mind is the enemy, what does it want? What is the mind's whim? Right? Mind, it looks for sense gratification, to enjoyment. Okay? Fear, ego, pride, attachment. This is the product of the mind. What's it looking for? You should recognize, what the mind is playing tricks, because the mind makes you think, this attachment, this I want. See, this fear, this is my fear. You see, it makes you identify with those things, with ego, with pride. And that is, the beginning of a distortion in your spiritual path, at least temporarily, until you come back, right? And the mind is looking for immediate pleasure and how to avoid discomfort.
It's so cold. You see? Or, so hot, so hot. No, I need AC. You see? But that is, you see, the mind is always working on that. Yes, is something that, we have to work with. It's natural. We have to take care of the body, but sometimes the mind, it looks more in the side of pleasure, avoid discomfort that is disturb our centralization in devotional service in our spiritual life. ओके, तो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवत गीता के 6.5 में से कि भगवान यहाँ पे बता रहे कि भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे कि अगर हमने हमारे मन को जीत लिया तो ये हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड है, हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। अगर हमने नहीं संभाला तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। और ये क्या चीजें करता है, इसकी कुछ क्वालिटीज बताइए प्रभु जी ने, जैसे ईगो, प्राइड, अटैचमेंट। ये चीजें अगर हम समझेंगे, ये इसकी कुछ क्वालिटीज के कुछ गुण है। अगर माइंड अगर बहुत हमारा एनिमी, हमारा दुश्मन अगर बन रहा है तो वो क्या चीजें देखता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, कहाँ से मुझे भोग करने के लिए मिलेगा। तो ये चीजें वो फिर देखता है कि ये मेरी चीज है, मुझे ये करना है। वो छोटी छोटी, हर छोटी छोटी चीज के खुशी में ढूंढना शुरू कर देता है। और वो हर छोटी छोटी चीज में खुशी भी ढूंढता है। और अगर कोई भी चीज जैसे बहुत ज्यादा से ठंड, कभी ठंड लग गई तो बहुत ज्यादा एक करेगा, अरे मुझे तो बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग लाइक वो रिएक्शंस देने लगेगा अलग अलग। ये अलग बात है कि हमें हमारे शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इन तरीके से क्या होता है कि हमें हमारा माइंड डिस्टर्ब हमें करता है। हमारी जो डिवोशनल लाइफ है, हमारी जो भक्ति में, हमारी जो ये जो सेवा है, हमारा जो जीवन है, उसमें भी वो धीरे धीरे हमें नीचे गिराने लगते हैं। तो ये उसकी एक शुरुआत है, तो हमें ये चीज को समझना है। यस प्रभु जी। So there is another thing of mind. It's flickering. The mind constantly like to change. Today I like this. Tomorrow I want to like that. You see, and this changing also is not very good. If you perform devotional service, you change the standards of devotional service. Today I change 16 rounds. Tomorrow I change 1 round. Today it's prasada. Tomorrow I eat whatever bog is out there. You see, with changing, flickering mind, we have to be a steady mind. To be steady, it's like you holding the horse in the, what do you call that thing? In whatever. The rope. No, the rope, you have to hold that rope. If you let the rope go, the horse goes wherever it wants, and you on top of the horse, you're going that too. So you have to control the mind. You see, by actually holding the rope, by having what? A superior knowledge. See, this is what we have in here that makes us one in a million. That we know the mind is not the ultimate authority in what's going on, you see, within our head. There is another authority that help us to control that mind. And that control, it comes from the senior devotee Shastra and the Sri Guru. You see, the spiritual master, that he helps us to control the mind. You see, well, young, I don't know, me it's a different story, but I have to get up in the morning, I have to take a cold shower. Before we used to take cold shower, and that was the old time. Now it's all nice and warm. You see, we make advancement. So anyway, so we, even in the cold season, so we have to go beyond, the mind, because the spiritual master say, this you have to do, you do it, and then you conquer the mind by the higher calling of the instructions that is there laid out for you. ओके, तो अभी प्रभु जी ने बताया कि हमारा जो मन है वो हमेशा इधर उधर भागता रहता है, कॉन्स्टेंटली, लगातार यहाँ वहां भागता ही रहता है, कभी वो रुकता नहीं है। और इससे क्या होता है कि यहाँ वहां भागता रहता है तो वो अलग 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 टेस्ट ढूंढता रहता है कि आज मुझे ये बदली, उसमें बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। हमारी जो भक्ति जो स्टैंडर्ड्स है कि हमें ऐसे चलना है, तो वो बार बार बदलता रहता है। जैसे कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे आज हमने 16 माला जप कर लिया, कल हमने एक ही माला कर लिया, आज हमने प्रसादम हमने पाया है, कल हमें बिना प्रसादम वाला कुछ खा लेंगे चलेगा। ऐसा करके वो हमेशा हमें भटकाता रहता है। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि माइंड हमेशा हमारा जो है, मन हमेशा हमारा स्टेडी, मतलब एक एक अवस्था में रहना चाहिए। जैसे कि घोड़ा जो होता है, तो घोड़े की जो लगाम होती है, जो रोप होती है, तो उसको हम जब चलाते हैं तो घोड़े की रोप, उसकी जो रस्सी अगर हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में है, तो वो घोड़ा सही
डायरेक्शन में आगे सही रीत में चलेगा। और जैसे ही हमारा मन है, हम अगर उसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो वो यहाँ वहाँ उस घोड़े की तरह चला जाएगा, तो जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि जैसे घोड़े की जैसे रोप है, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे हमारे जीवन में वो जो रोप है वो हमें कंट्रोल किसी और को देना, ना कि हमारे मन को, क्योंकि मन तो हमारा लगातार इधर उधर भटकता रहता है, फ्लिकरिंग हमारा माइंड है। तो वो रोप हम किसको देंगे? सुपीरियर एक जो रोप होती है, जो एक हमारा जो मन है उसको, क्योंकि हमारा मन अल्टीमेट ऑथोरिटी, मतलब वो सही नहीं है, हम उसको और ऊपर वाले को देना होगा। तो जो ऊपर में जो होगा वो कौन होगा? हमारे श्री गुरु, हमारे जो स्क्रिप्चर्स जो है हमारे, और हमारे हमारे जो सीनियर डिवोटीज है, हम उनको देंगे, उनसे समझेंगे कि हमें हमारे लाइफ में आगे कैसे क्या चलना है। यस प्रभु जी। So when I read Bhagavad Gita first time, one of the first pictures or paintings that really captivated me is this one. Can you see it? See? हाँ। What is that? You recognize that, right? It's the Yeah. 5 horses with the 5 senses, and Krishna Arjuna is there. You see? This is exactly our position, right? We are holding the horses in the, it's called the reins. That's the rope. We're holding the horse and the 5 senses, and that we're controlling the senses. Okay? Go ओके, ahead. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जब मैंने पहली बार भगवद गीता का जब अध्ययन किया था, तो उसमें से कुछ पिक्चर्स जो है कुछ ऐसे उन्होंने मुझे बहुत आकर्षित किया था। तो उसमें से प्रभु जी ने अभी जो हमें फोटो बताया कि 5 घोड़े हैं, उसमें पीछे कृष्ण और अर्जुन दोनों हैं। और वो जो 5 घोड़े हैं वो किसे बता रहे हैं? कि हमारे जो 5 हमारी जो इंद्रिया है, हमारा जो मन वगैरह है, वो उन्हें ही दर्शाता है। अगर हम उसे कंट्रोल करके सही सही से तरीके से चलेंगे तो हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। यस प्रभु जी। So, there's a nice story from the American Indians, the Sioux, the Chickasaw, the different tribes in there. So they have a very old history that this young boy, he went to the elder of the tribe and he said, Master, I'm in conflict because I feel in my head there is 2 wolves, one wolf, white wolf and the black wolf. And one white wolf tell me good things, and the black wolf is telling me no, not so good things, some bad things. I don't know what to do, who to follow, what should I do? So the master said, well, you follow the one you feed the most. No, that's the one who's going to win, because who is going to win? These wolves are fighting. Who is going to win? And the master said, the one you feed the most, the one you pay more attention to it, to pay more attention to the white wolf, white wolf will win, right? So similarly, in our lives, we should pay attention to our mind, that is with the white wolf of Krishna consciousness, you see, with Nrsingadev, you see, and is protected. And then, our white wolf will win. या ओके, तो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी हम एक स्टोरी के थ्रू जाएंगे, समझेंगे कुछ, कि एक अमेरिका और एक इंडियन की लाइक स्टोरी समझेंगे। तो उसमें एक अलग ट्राइब जो होती है, एक अलग जनजाति होती है। तो उसमें से एक लड़का था, नौजवान लड़का था। तो वो अपने मास्टर के पास जाता है और उसे उनसे कहता है कि मैं हमेशा अपने मेरे मन में ना 2 चीजें चलती रहती है। तो वो कभी यह बताती तो कभी ये बताती, तो मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं उसको कैसे, किस चीज को मैं समझूं, किसे फॉलो करूं, समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक तो जैसे जो भेड़िया होता है, एक काला भेड़िया और एक सफेद भेड़िया। तो वो कभी जो काला वाला है वो हमेशा मुझे गलत गलत चीजें बताता रहता है, और एक जो सफेद वाला है मुझे अच्छी अच्छी चीजें बताता रहता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसको फॉलो करूँ, किसे लेकर मैं आगे बढ़ूँ। तो उनके मास्टर ने इस चीज का जवाब दिया कि तुम उसी चीज को चूज करोगे जिसे तुम ज्यादा अटेंशन देते हो, जिसे तुम ज्यादा फीड करते हो, ज्यादा तुम उसके ऊपर तुम ध्यान देते हो, तुम उसी चीज को फॉलो करोगे। तो हमें ये चीज समझना है कि जो सफेद भेड़िया है वो हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफ जो है वो। यस प्रभु जी। So the mind's win is that urgent and emotional, self-centered. There's nothing to pin the mind on. Don't have a higher authority.
so it's self-centered. Seeks comfort, recognition, or control, and changes with circumstances. Chanchal, that is the mind. It's chanchal. It's always changing. Sorry, Prabhuji, could you please repeat it again? Because So the my mind mind's, was in the race the to. mind. Get it, quick, get that horse. This Yeah. he left this table. Bring the horse back. Okay, the mind is the wings. The where are we? Oh. Bring peace. Okay. My horse here also left the barn. Oh, the mind's going everywhere, man. Okay. So mind's whim is urgent and emotional, okay, and self-centered. It seeks control, recognition, and comfort. That's the mind. Change with circumstance. So we know that the mind who is not paying into a higher pivot, it's like a floating leaves, like Arjuna said, the mind's like a floating leaf going in the wind. That Arjuna said, I cannot meditate. You see, look, my mind's like floating in the wind like leaves on the sky. So we have to paint the mind with process of Krishna consciousness, service, hands on the ground, proper service, constant. ओके, तो प्रभु जी यहाँ पे बता रही है हमारे जो मन की जो तरंगे जो यहाँ वहाँ भागती रहती है, उसे हमें समझना होगा कि उसमें जैसे अलग अलग 6 प्रकार के चीजें जो होती है वो उसमें आती रहती है। एक तो हमारा मन जो है वो हमारे कंफर्ट जोन में हमें हमेशा रखना चाहता है, वो बदलाव नहीं चाहता है, या तो बदलाव हमेशा करता रहता है। इस तरीके से चीजें यहाँ वहाँ भागती रहती है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मन को जो पकड़ना है उसे किसी सुप्रीम से, किसी हायर चीज से उसे पकड़ना होगा। तो वो चीज क्या है, हमारी जो भक्ति में जो सेवा है उसमें हम अगर हम सेवा करते रहेंगे तो उससे वो चीज कंट्रोल में आएगी। वरना जैसे अर्जुन के साथ हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जैसे अर्जुन का भी मन यहाँ वहाँ घूम रहा था, फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से बताया कि कैसे क्या करना है। तो जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया, फिर धीरे धीरे उनका भी मन वैसे कंट्रोल में आ गया। यस प्रभु जी। So, heart's calling. You see, we have two opposing elements. You see, your mind says one thing, your heart says another thing, but the heart purified by devotional service is calm and steady, service oriented. You see, we control the mind by service. You see, some productive that, is the benefit of the people around you. You may have a job and that's, just a job, but then you're being productive. It's a little bit a way of controlling the mind. But when it comes to a spiritual platform, then we will engage the mind that serves of devotional service. Now, the mind is service-oriented, is consistent with devotional principles and support by the guru instructions. Then, yes, you can overcome the frailties of the mind, the chanchalaness of the mind. ओके, तो अभी प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे हमारे हृदय की जो आवाज है उसे हम कैसे सुनेंगे, और उसे हमारा जब शुद्धिकरण जब हो जाएगा, हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा, जब हम भक्ति में सेवा जब हम करेंगे तो हम उससे क्या होगा, हमारा मन हमारा हृदय शांत होगा, एक जगह पर टिकेगा, तब हम चीजों को समझ पाएंगे। वैसे ही हमारा जो मन है उससे भी हम ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम हमारा बहुत सारी जैसे ऑफिस वगैरह में हम जो हमारे दूसरी जो पार्ट होता है उसे हम बहुत सारी काम जो है प्रोडक्टिव अच्छे से कर पाएंगे, और वो दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। और वैसे ही है हमारा भक्ति में सेवा, भक्ति में जो हमारा जीवन होता है उसमें भी हम ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छे से हम सारी चीजें सर्विसेज कर पाएंगे, और हमारा डिवोशनल सर्विस करके तो हमारा मन हमारा हृदय ऐसे धीरे धीरे कर करके कंट्रोल में आएगा। और मन, और वो कैसे आएगा, हम हमारे जब गुरु की जब वाणी जो भी होती है उसे हम सुनेंगे, समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे हमारी लाइफ में, तब ये चीज होगी। और जो मन का जो स्वभाव है, चंचल जो मन है इधर उधर जो हमेशा भागता रहता है, वो धीरे धीरे कंट्रोल में। यस प्रभु जी।
So Srila Prabhupada said, if you wanted to know whatever something's right, see whatever helps you to remember Krishna or make you forget Krishna. Well, if you go to a bar or go to a party dance, that would be very helpful. But if you go in the temple and you bring your friends and you take prasad, then that helps you remember Krishna. So there you have one way to determine, which wolf you're going to feed, the white wolf or the black wolf. Me, I have a third wolf, the prasad wolf. I like that wolf. Okay, sorry. Yes, you go ahead, Mata. So if he helps Okay. you remember Krishna, it's very good. ओके, तो श्रील प्रभुपाद प्रभु जी यहाँ पे बता रहे कि हमको श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया कि हमें वो ही एक्टिविटी, वो ही सब जैसा काम कार्य करना चाहिए जो हमें कृष्ण को याद कराने में मदद करता है, ना कि वो कि जो हमें कृष्ण को भुला देता है। जैसे हम मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहां पे हम क्या होता है कि हमें प्रसादम हम पाते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं, तो प्रसादम में भी हम कैसे भगवान कृष्ण को ही याद करें। तो वो कार्य क्या हो गया कि हम मतलब हम कृष्ण को याद कर रहे हैं प्रसाद पाते समय भी। तो उसमें क्या होगा, जो हमारी जो दो भेड़िया है, जो काला और जो सफेद है, तो उसमें हम हमारे क्या करते हैं, सफेद वाली भेड़िया को हम उसको ज्यादा फीड करते हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यस प्रभु जी। So, how to say wolf in Hindi? भेड़िया। Beria, huh? या Oh, Beria. Beria Balone. Oh, maybe Balo if it's a white berry. Okay, so we have here then a process, right? How to know what the calling is, how to determine which way to go. For that, what we need is clear vision. We need to be clear. When things are clear, easy. If you go in a dark room, it's dark. There's fear. You don't know what I am. You stomp in the furniture, or some bad, like that. Or if it's fog, just the other day I was driving. It's really foggy here. I heard in Delhi is even more fog. And here was so fog the boats could not go to Navadvip. They couldn't go in the morning. They have to go at 10 o'clock when the sun is up and the fog is finished. So if things are foggy, you see, then how can you see which way to go, what to do? We have to clear that. So fog is like a little bit of dust in the mirror. Chetada paramajanam. It's like the mirror of the mind has dust from many years of accumulated whatever activities we did and got stuck in the mirror. So we have to, and how do you clean the mirror of the mind? That's a question. ओके, तो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे कि हमें ये चीज कैसे पता चलेगी कि हमें किस रास्ते पर जाना है, कौन सी राह चुननी है। अगर हमारे पास इस चीज को लेके अगर क्लियर एक दृष्टि होगी कि हमें किस राह पे आगे बढ़ना है, तो वो अच्छा होगा। वरना ये चीज कैसे एक उदाहरण जो प्रभु जी ने बताया कि एक अंधेरे अंधेरे से भरा एक रूम है, एक कमरा है, तो उसमें हम जाएंगे तो हमें पता नहीं कहाँ पर क्या चीज है क्या चीज नहीं है, तो हम कहीं पे शायद टकरा जाएंगे, किसी कवर्ड से, फर्नीचर वगैरह से हम टकरा सकते हैं। वैसे ही हम जब किसी धुंधल जो होती है, अभी जो ठंड के समय में हम देखते हैं बहुत सारी धुंधल होती है, तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें कहाँ जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इसी तरीके से हमारा जो मन है वो भी ऐसे ही मतलब पूरा धूल से भरा हुआ है, जैसे एक धूल से भरा हुआ है जो कांच होता है, तो उसमें हमें समझ में नहीं आता, दिखता भी नहीं है। तो जो प्रभु जी ने यहाँ पे जो नाम लिया चेतो दर्पण मार्जनम, तो हमें नहीं पता कि कहाँ पे कैसे जाना है। अगर ये, क्योंकि ये चीजों का जो धूल जमी वो प्रभु जी ने इस चीज से उसे कंसीडर किया है कि हमारी जो एक्टिविटी जो होती है, हमारे जो कार्य किए बहुत साल से हम जो करते आ रहे हैं, तो वो प्रभु जी, तो हम वो कैसे समझाएंगे, कैसे वो साफ करेंगे, प्रभु जी का ये सवाल है सबसे। तो कोई इसका जवाब देना चाहेगा तो वो दे सकता है। Okay, whatever you said. Now, yesterday, I went to make a copy of keys for my wife for garden gate in here. She said, making a key. I said, I know the place. So I went to Bampukur. This is our town next to Mayapur.
small village. So in that specific road, there is a small entrance, just the size of a door. It goes far inside, maybe 12 feet, and this old man is there. All he does is to try to repair things. He repairs, fan, motors. He does key. But he does the key by hand. It's amazing, you know. And so I went there. I'm making the key. I was waiting there. So I was waiting. He was working in the key, and I was looking at the shop, and everywhere has this hundreds of little pots with a screw, with little pieces of metal, and half dismounted air conditioning, no air conditioning, like radio or whatever, electronic things, and one piece here, one piece, but thousands of pieces everywhere. And I was thinking, my gosh, this man, I think every little pot. How did he get there? Actually, I know in my house, I built up a little bit. I know that armara when I got it, that thing, and when I put it, the clock when I put it. Also in your house, these things too. So this man, he should know what every little pot, every little piece inside. Where did that come from? Oh, 2 years ago, this guy brought a motor. I took the piece. Some piece was left, and put it there. So he fixed things. Something left, he put it there. Left, put it there. So after all this leftover, his little shop is full of all these mechanical half alive things laying around, and in the middle of this is there working. It's a dadu. What can I say? But what about if we have karma like that too, and we have some karma, some distress, we have some trauma a little bit here, we have some disappointment over there. So it's a little bit of little karma there, a little karma there. So we have a little pots of karma everywhere in our life, accumulating. You see, see that it's going to clean this up. But while it's not clean, we have all these little things accumulating in our mind, in our heart. This guy did me bad, 10 years ago. I never forgot, this thing happened, and this, I was afraid. I went to, swim in the ocean, I was afraid. All these little fears, all these little things that we have in our heart, it's like little pots, like the old man. They have all this junk around, sitting around, taking space, and I don't know how this guy, even stay here, he stay there all day doing this little chick, 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 whatever it is that he does. So we should have a clean shop, everything out. We should have all the things we use only, and the holy name, the service, the deities of Gaura Nitai, and that's all we need. We should have a clean life, and not in the sense just mentally, but also physically. Our rooms, our house should be clean, should be not junk. A lot of things which is not good for Vastu. They hoard energy. All this energy going, all these things. We should have a clean the mind. You see, like every day is a notun Jivan. It's a new life. You see? Yes. Go ahead. Okay. It was too long, but I will try. Long? Can you hold for just 1 second? Sorry. Yes. Who is that? Your mom? Yes. She was going out, so she was telling, lock it, Malay. You have another key, just you did. All the moms are always worry about us. Okay. Yeah. Okay, तो प्रभु जी ने बताया कि जैसे वो कल जा रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने देखा कि उनके जो चाबी वगैरह का कुछ काम था, तो वो जब जा रहे थे तो छोटा सा एक गांव है जो बेलपुकुर करके गांव है, तो वहां पे प्रभु जी जा रहे थे किसी काम को लेके। तो वहां पे जो देखा, प्रभु जी गए तो एक
ओल्ड मैन जो थे वहाँ पे, वो बहुत सारे काम कर रहे थे वहाँ पे। तो प्रभु जी इंतजार कर रहे थे और देख रहे थे वो कैसे क्या चीज है। तो वो अपना काम कर रहे थे। प्रभु जी आज आसपास में जितनी भी चीजें थी उन सबको उन्होंने देखा, और उस चीज से प्रभु जी को जो विचार आया, तो जैसे कि वहाँ पे लगभग 100 के करीबन बहुत सारे छोटे छोटे पॉट्स रखे थे। तो उसमें सारी चीजें, कोई पे कहीं पे क्या स्क्रू रखा था, कहीं पे क्या चीज है, कहीं पे क्या चीज है, कोई मोटर का कोई भाग है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई पार्ट है, ये ऐसे कर करके पूरी उसकी शॉप, जो उसके आसपास का जो भी जगह थी पूरी भर के रखी हुई थी। तो प्रभु जी बोले कि ये इसी तरीके से है, जैसे कि हमारा जो मन है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो कर्म है, यहाँ वहाँ हमने सब भर भर के जो रखे हैं। तो इन चीज को हमें साफ करना होगा, क्लियर करना होगा। जैसे चेतो दर्पण मार्जरम जैसे बताते हैं, हमें इन चीजों को सब जो इकट्ठा हमने किया हुआ है, हमारे जो कर्म है वगैरह, उन सारी चीजों को हमें हटाना होगा, साफ करना होगा। जैसे कि प्रभु जी बता रहे, हमारे घर में भी बहुत सारी चीजें जो होती है, हम देखते हैं कि हमारा कपड़े हमें यहाँ रखने हैं, ये सामान यहाँ रखना है, हम कभी कभी उसमें भी अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या वो पर्सन कैसे याद रखते होंगे कहाँ से क्या चीजें लेनी है। कि कई साल पहले कुछ किसी का कोई मोटर का कोई पार्ट यहाँ पे पड़ा था, तो वो निकाल के किसी का अगर कोई आया है रिपेयर में, तो वो वहां लगा देते हैं। ऐसे कर करके सब उन्होंने इकट्ठा करके रखा था, तो उसमें क्या होता है, वो एनर्जी को पूरा ब्लॉक हो जाता है वहाँ पे। तो ऐसे हमारे जीवन में भी हमें, हमारे घर में भी हमें साफ सफाई रखनी है, हमारे मन को, हमारे हृदय को भी शुद्ध करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हरिनाम से करेंगे। और हमारा जो घर वगैरह हमें साफ करना है, वहां पे भी जो एनर्जी ब्लॉकेजेस जो भी हो जाते हैं वास्तु के हिसाब से, तो वो भी हमें साफ सफाई करके सब हमें हटाना होगा। और हमें हमारा जीवन कैसे रखना है, एकदम नूतन, मतलब जो एकदम साफ क्लियर रखना होगा, न्यू की तरह एकदम। यस प्रभु जी। Because Srila Prabhupada said, chanting the holy name clears all confusion from the heart. But there's a problem. We have a problem. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. But the confusion didn't disappear. Well, it takes time. Just like you take a Tylenol, it takes time to start to have effect. Even that takes like 1 hour before it's fully in effect. So we have to keep chanting and have the chanting within our mind, so we don't get in this, we have confusions in the heart, because confusion comes from a duality. Oh, this I should do, or I should do that. And both things are painful to do. We don't want to make a decision. It's hard. So we need a association of senior Vaishnavas, and we need the Shastra, yes. We need the scriptural injunction that help us by reading Prabhupada's books. We need the Vaishnavas. We can confer and go back and forth and try to see from a different angle, you see, and clear up the mind's confusion, so we can be steady chanting holy name. You see, we have to keep chanting, keep chanting. You see, can't stop. Once you stop, the 10 million people come, you go and flat you in the ground. You have to keep chanting, because we are the 1 in a million that are in this position. We know what the mind is, and that how you have to control the mind. We have the process to control. It is very rare. You look around you, you're all students. Tomorrow you look around, see if they are wondering, oh, my mind, I have to pull my mind, I have to control. No, they're just going, whatever the mind tells them to do. The mindset goes here, the body follows the mind, you see? And you are fortunate. So you take that fortune and protect it carefully. तो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया है कि हम हमारे हृदय को कैसे शुद्ध करेंगे, नाम जप करके। तो हम नाम जप कैसे करना है कि हम जैसे भी, हम कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमें बस हरिनाम जप से करना शुरू कर देना है जोर जोर से। तो वो जो माइंड का जो डुअलिटी है, जो उसके दो तरीके जो होते हैं, एक ये करना है वो करना, वो चीजें धीरे धीरे करके रिमूव होने लगती है। और ये अचानक से नहीं होता है। हमें क्या करना है, हरिनाम का जाप लगातार 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 बस करते ही रहना है। तो ये चीजें होनी शुरू हो जाएगी कि हमें, हमारा एक क्लियर विजन हो जाएगा, कंफ्यूजन जो है हमारे लाइफ में जो हमें, वो भी हटने लगेगा। तो इन चीजों को समझने के लिए और लगातार लगे रहने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे श्री गुरु के चरण में, हमारे श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तक है उनको लगातार उनका हमें उनके अंडर में रह के हमें ये चीजें समझनी होगी। तो हम इस चीज पे काम कर सकेंगे, और हम लगातार, हमें इस चीज में हम लगे रहेंगे।
और प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें मिलियंस जो लोग हैं, बहुत सारे हजारों लोग हैं, उनमें से हम एक है जो इस चीज को आज हम समझ रहे हैं। तो प्रभु जी आप सबको बधाई देना चाहते हैं और खुद को आप अपने आप को भाग्यशाली समझे कि आज हम इस चीज को, इस ज्ञान को यहाँ पर समझ रहे हैं। यस प्रभु जी। Tomorrow, you walk around and you have your friends and you have different people you meet. So you look at them and you ask yourself, do they know the process of controlling the mind? Do you know actually they have a mind to control? Oblivious to the whole thing. ओके, तो प्रभु जी बता रहे कि कल जैसे अगर तुम कहीं बाहर जाओगे, तो तुम तुम्हारे दोस्तों को आसपास में करीबी में उनको देखना कि उनका दिमाग कैसे यहाँ वहाँ भटकता रहता है, और वो उन लोगों को इस चीज का ज्ञान ही नहीं कि उनका मन उन्हें घुमा रहा है, उनको कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हें इस चीज का ज्ञान है कि तुम्हारा मन तुम्हें भटका रहा है, और तुम्हें तरीका भी पता है कि कैसे उसे कंट्रोल में लाना है। यस प्रभु जी। You see, and the more you practice Krishna consciousness, spiritual life, the more you see you're different. People already see you different. What's that? She used to be partying. Now she's not partying. She's not drinking. The guy is not smoking. You know, see, they already see you different. You see, and you have the duty to protect this difference because it's Krishna that makes you different. You see, it's your closeness to Krishna that makes you different. You protect this. You don't seek the association of those people. You have cordiality between those people and you, but not association. You don't take anything from them. You can give something, Krishna conscious to them, but you don't take anything from them. They cannot offer anything. The mind is floating around, in the ether somewhere. What they can offer you, you see? So you're different. You protect that very carefully. तो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जितने आगे कृष्ण भावना भविष्य में हम आगे चलते रहेंगे, वैसे ही हमें समझ में आएगा कि हम देख पाएंगे कि हम लोगों से अलग है, और लोग भी वो खुद भी हमें इस चीज से पहचानेंगे कि ये पहले तो ऐसा नहीं था या नहीं थी, अब कैसे ऐसा हो गई है। अभी तो ये पार्टी भी नहीं करती है, मतलब जो स्मोकिंग जो होता है वो भी नहीं करती है, ड्रिंक जो भी पार्टी वगैरह सब सारी चीजें अभी तो ये करती नहीं है, करता नहीं है। इसमें कुछ तो बदलाव आया है। तो हमारा ये दायित्व बनता है, हमारे कर्तव्य बनता है कि ये जो बदलाव है कृष्ण भावना भविष्य में आके हमें इसे प्रोटेक्ट करना, इसे संभाल के रखना, क्योंकि ये जो बदलाव है ये स्वयं कृष्ण हमें हमारी लाइफ में ऐड कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि इस बदलाव को हमें संभाल के रखना है, और उन लोगों का हमें संग नहीं करना है जो पहले जो करते थे हम जैसे संग, उन लोगों का संग नहीं करना है। अगर कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है कि उनसे बात वगैरह करने का हो रहा है, करने पड़ता है तो कर लो, लेकिन उनसे वो चीजें नहीं लेनी है जो हमें क्या करना, प्रोटेक्ट करना। उनसे वो चीजें नहीं लेनी जो वापस से इन सारी चीजों को डिस्टर्ब कर दे। यस प्रभु जी। So now I'm going to talk, we're almost in the hour now, but I'm going to talk about a very important thing. This is a common mistake, okay? We all fall for it. It's calling the mind's desire intuition. Intuition. That is a common mistake. And I'm going to say here, why is that? Because, yeah, you can do that part to illustrate, please. ओके, तो प्रभु जी बता रहे हैं कि एक कॉमन जो हम गलती करते हैं हमेशा, वो ये करते हैं कि हमारा जो मन हमें जो बोलता है कि ये करना है वो करना है, इससे हम क्या समझ लेते हैं, हमारा इंट्यूशन मतलब हमारे अंदर का जो आवाज होती है उसे हम वो समझ लेते हैं। यस प्रभु जी। Okay? Not every inner voice is spiritual. Okay? You be careful with that. See, that's why we're talking here. You see, what is the wings of the mind and what is the actual, the white wolf and the black wolf. You see, so true intuition is infused with bhakti. You see, so it never contradicts the scriptures. Okay, it never disrespects the guru. It never feeds false ego. If you have an intuition that you're better than anybody else, you just stop right there, because this intuition is the black wolf. He's not helping you. Okay?
you have to see our position as the servant of the devotees. We actually have, that position as the servant. It's a glorious position to serve the Vaishnavas, you see, to assist them in so many ways. And so if not every inner voice is spiritual. You have to be careful because some intuition gives us trouble. Oh, I know I'm going to win this lottery, or I'm going to win the gambling, or that is the girl for me. That is the boy for me. I feel it. I feel in my heart. How do you feel in your heart? I was what, 17 years old. I feel like, yeah, this girl, man, oh, she's the one. No, I'm 70 years young. And now I'm thinking, what? That thing there? You see how they become different. What is a wonderful thing today, 10 years from now, you look, what was that? How could I ever think, in getting into that situation, whatever it was? You have to be very careful. Therefore, what is the path? The path is to always have the authority, Guru Shastra, Mata Devam, right? You have your parents. If you live good with your parents and cultivate your parents, you're wonderful. You're very lucky. Sometimes, in the West, it becomes very fashionable to go against the parents. I don't know who put this in the mind of the people. The parents are atheists and they become devotees. That's a different story. But in India, the parents, they're a source of help to you. Okay? And then you have the scriptures that help to guide you in a more general sense and the guru in a more specific sense. You see, to take proper steps in your life, because even if you do a misstep, something wrong, because you follow Guru and Shastra, Krishna will take that wrong and make it right. 100%, I guarantee you. There's no mistake. You cannot make a mistake if you sincerely follow Guru and Shastra. And the advanced devotees, you took the trouble to confirm your intuition in the heart instead of just following blindly. Yeah. Wow. Yes. तो अभी प्रभु जी यहाँ पे बता रहे कि हमारे जो इंट्यूशन वाला जो पार्ट है, वो हमेशा ये नहीं हमारा जो मन में जो इंट्यूशन वाला पार्ट जो बोलता है कि ये इंट्यूशन है, वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो वो स्पिरिचुअल कॉलिंग ही होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उस चीज को अगर हम फॉलो कर लेंगे, वो उसने जो बताया उस राह पे अगर हम चलेंगे, तो बहुत बार वो हमें किसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है उसे। तो हमें इस चीज को समझना होगा, और हमें इस चीज को हम कैसे समझेंगे कि हमें हमारा जो इनर कॉलिंग है वो कैसा होना चाहिए। वो स्क्रिप्चर जो हमारे शास्त्र है उससे अलग नहीं होना चाहिए, जो हमारे गुरु कह रहे हैं उससे वो अलग नहीं होना चाहिए, हमारे सीनियर वैष्णव कह रहे हैं उससे हमें सब अलग नहीं होना चाहिए। वो जो कह रहे हैं उसी के मुताबिक होना चाहिए। तब हमें समझना चाहिए कि हाँ, ये हमारा इंट्यूशन इनर कॉलिंग है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? ये सारी चीजें फॉलो करने से। और हमारी जो स्थिति है, जो हमारी जो पोजीशन है, वो क्या है? सर्वेंट है, हम दास है भगवान के। और ये बहुत ही एक सुंदर हमारी जो पोजीशन है वो है। तो हमें इन चीजों को हमें समझना होगा, बहुत ही ध्यान रखना होगा इन सारी चीजों का हमें। और प्रभु जी ने यहाँ पे बताया कि अगर हम इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे तो क्या होगा कि हमारा मन कभी कहेगा कि हाँ, मुझे गैम्बलिंग करनी है, कभी इस लड़की के पीछे भागना है। कभी अगर लड़का कोई है, तो अगर कोई लड़की है तो बोलेगा कि मुझे इस लड़के के पीछे भागना है। तो वो इस चीज को क्या समझ बैठेगा कि हमारे इंट्यूशन, जबकि ये चीज तो नहीं है, ये चीज गलत है। ये अभी शास्त्र में या फिर हमें गुरु हमें ये सारी चीजें नहीं बताते हैं। और हम अगर कहीं पर भी गलती करते हैं तो वो हमें हमारे इन सारे संगों में रह के हमें पता चलेगा। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि इंडिया में बहुत अच्छी चीज है अगर हम हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे माता पिता के साथ रह रहे हैं और हम उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर कहीं पर भी कोई भी गलती कर देते, मिस्टेक कर दे, तो हमें बताते हैं कि तुमने यहाँ पे ये चीजें गलत की है, वो हमें छड़ी दिखा के सही कराते हैं। लेकिन वेस्टर्न में अभी आजकल वहाँ पे क्या फैशन चल रहा है, उनके माइंड में किसी ने ये चीज डाल दी कि हमें पेरेंट्स के बस जस्ट अगेंस्ट में ही रहना है, बस उनके उल्टा ही चलना है। वहाँ पे ऐसा एक फैशन के तरीके से चल गया है, जबकि ये चीज गलत है। और अगर हम हमारे सिंसियरली, अगर बहुत अच्छे और सच्चे हृदय से हम अगर फॉलो कर रहे हैं सारी चीजों को, तो हम कभी गलत नहीं होंगे। यस प्रभु जी।
Intuition is like fire. You see, fire is good in the stove. When you light the incense in the matchstick, it's good. But uncontrolled fire, you follow blindly, it can burn the house and put you in a very stressful position. Because if the intuition is contaminated, it shows up in the results, in the consequences. But by the time you figure out, this is not the way I want, but it's too late. You see, then you have to leave the mistake. And if you make an intuition in your relationship, you're going to live there for maybe a whole life. You see, and many things like that. Some decisions in the intuition, important, financial, relationship, you be very careful to make a step that, you're not going to regret, the consequences because you follow your intuition. Sometimes maybe good, like, Elon Musk, maybe he has intuition, but he's very intelligent. He never has intuition. He doesn't have intelligence behind. He's very good also. He make all these little, mechanic things. You see, unless you are like Elon Musk, maybe you should curtail your intuition and follow more the authorities you have in your life, because it's a good thing to always have the back of authorities because you protected them. ओके, तो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हमारा जो इंट्यूशन है वो एक आग की तरह है। और उसमें प्रभु जी ने उदाहरण बताया कि एक जो माचिस की जो डिब्बी होती है उसमें वो आग कैसे एक कंट्रोल में एक लेवल पे होती है, तो उसमें हम उसे मतलब जब भी हम आग जलाते हैं वो एक कंट्रोल में ही होती है। और हमारा एक दूसरा तरीका जो होता है, कहीं पर भी बहुत बड़ी बात आग लग रही है, वो अनकंट्रोलेबल है, तो उसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे हमें नहीं पता। तो वैसे ही हमारा इंट्यूशन जो है वो गलत कब होगा, जब वो गुरु शास्त्र और इन सब के रिलेटेड नहीं होगा। वो हमें हमेशा डिसीजन कभी भी लेने के लिए बोलेगा कि ये इंट्यूशन के हिसाब से हमें ये डिसीजन लेना है, ये हमें लेना है, तो वो गलत ही होगा। वो भले फिर हमारे फाइनेंशियल लेवल पर हो, हमारे रिलेशनशिप में हो, तो वो हमें गलत कराएगा। और हम उस चीज से फिर हम सिर्फ उसका जो भी परिणाम निकलेगा उससे हम सिर्फ दुखी होंगे, क्योंकि तब तक वो सारा समय बीत चुका होगा। हम पीछे जाके वापस से वो सारी चीजें ठीक नहीं कर सकते। तो हमें हमेशा हमारे इंट्यूशन को नहीं सुनना है, हमारे अथॉरिटी को, जो हमारे सीनियर वगैरह है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, उसे हमें सुनना होगा, समझना होगा। जैसे एलन मस्क का प्रभु जी ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि वो हमेशा अपने इंट्यूशन को लेके नहीं चलता है, उसके पीछे जो उसका इंटेलिजेंस जो है, उसका जो माइंड है, वो उसे सोचकर समझकर फिर वो आगे सारे डिसीजन अपने लाइफ के फिर वो लेता है। तो वैसे ही हमारे इंट्यूशन से सारी चीजें नहीं करनी, हमारे जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसके हिसाब से हमें हमेशा काम लेना है। यस प्रभु जी। You be smart. You all very smart students. You just take the word intuition. What intuition means? In means inside. Tuition, to learn. So you're learning from the inside, or you take a flash of comprehension. Oh, this is the way. You see, this is like you self-taught a process or a path in your life, but it's never guaranteed that the path is the one that's right for you 100%, because the path could be contaminated with your personal desires. You see, well, you have a desire to accomplish something, that your intuition is going to that side because this is what you wanted to do. So therefore, the best is to see the difference. The mind asks, what do I want? And the heart asks, what does Krishna want? You see, because the real intuition is coming from Paramatma, the Lord in the heart. He is the one, the master of intuition. Tuition, dadami buddhi yogantam. He gives the knowledge inside in the heart. But you see, your heart's not connected with Paramatma. In between is the false ego, the mind, and it goes there and go in the mind. But by the time it comes out, it comes a different data, corrupted data. Huh? What's going on?
You see, so you have to make sure data is pure from Paramadatta, no, the Paramatma. You see, and the best way is, keeping pure, keeping chant the holy name, keeping following the process of devotional service. So Paramatma can get in touch with you, get the fog out. You can see clearly what you have to do after consulting with your parents, with spiritual master, advanced devotees. You can take a step in your life that is secure for you. You see, not a whisper of wind, let me do this, let me do that. It doesn't work like that. We're not geniuses. We're just normal people. You see, we cannot go and do whatever we want. We're not like a Mozart or something. You can go and write something, in the spirit of a moment. For us, we're the normal people. But we're one in a million. Not even Mozart is one in a million, because he was not chanting Hare Krishna, even though he was very talented. True. We are one in a million because we have Krishna. We approach Krishna and we know we have to control the mind and we have the process. Okay? So you keep that in mind. You have to have the purification. So your intuition is coming from Dadami Buddhi Yogantam, from the Paramatma. Krishna is actually telling you, how to come back to him. ओके, तो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे कि आप सब बहुत ही स्मार्ट है, और इंट्यूशन का एक जो शब्द है इंट्यूशन, इन को हम अलग करेंगे, ट्यूशन को अलग करेंगे। तो इन जो होगा वो हमें क्या बताएगा, हमारा इनसाइट, हमारा अंदरूनी करण जो बताएगा वो। और जो ट्यूशन है वो क्या होता है, जहाँ पे हम चीजें सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो इनर इनसाइड लर्निंग वो हमें सीखेंगे इंट्यूशन से। तो वो हमें ये चीज है सीखनी होगी कि कैसे हमें हमारा इनर कॉलिंग हम कैसे सुने, कैसे समझे। तो ये कैसे होगा, जब हम अपने मन को, हमारे हृदय को हम उस सुप्रीम तक हम जब लेके जाएंगे, उनसे जब कनेक्शन हमारा जब बनेगा, तभी ये इंट्यूशन वाली चीजें सही होगी। वरना वो इधर उधर भागता रहेगा, और जो चीजें सही में अंदर से आ रही होगी, उसके बीच में क्या आ जाता है, कभी फॉल्स ईगो, ये वो चीजें, हमारी इच्छाएं, फलाना ढिमकाना, सब सारी चीजें जब आ जाती है, जैसे फॉग की तरह जैसे आ जाती, तो हमें हमारा जो अंदर से इनर कॉलिंग जो आ रहा होता है उसे हम समझ ही नहीं पाते हैं, और डेटा कुछ और ही निकल के आ जाता है। और जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि ददामि बुद्धि योगम, मैं ही तुम्हें बुद्धि देता हूँ। और ये चीज को हमें समझना होगा कि जब भगवान कृष्ण बुद्धि दे रहे हैं, तो हमें हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो इनर इंट्यूशन जो आता है, हमारा जो मन है, हृदय जो है, वो हमें भगवान से जोड़ना होगा, भगवान कृष्ण से जोड़ना होगा। तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो इंट्यूशन के क्या है, मास्टर है। तो हमें ये चीजें समझनी होगी, अदरवाइज हम इस चीज की गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा जो जिस राह पर हम चल रहे हैं, हमारा इंट्यूशन जो है वो सही ही है, सारी चीजें वो सही कह रहा है, क्या गलत है, क्या चीज सही है। तो हम इस चीज को समझ अच्छे से नहीं पाएंगे। यस प्रभु जी, इट वॉज टू लॉन्ग, आई ट्राइड टू कवर इट। No, you're doing fantastic. Don't worry. Everybody going like this. So it's I good. don't know, I can only see you on my screen here. Really, I see all the little faces in here. So we're almost done. We have like 2 more minutes. So bhakti means training ourselves to silence the mind. Shut up. You see, and hear the super soul through devotion. You see, that intuition we look for. Hear Krishna guiding us in the heart. To do that, we also take the guidance from the spiritual master outside and the super soul inside. So we are protected in these 2 parameters. ओके, तो प्रभु जी बता रहे हैं कि हम जब भक्ति में हैं, तो हमें एक ऐसी ट्रेनिंग है मिलती जो है, जो हमारा मन जो हमें बार बार जो परेशान करता रहता है, उसे हमें कहना है शट अप। तो हमें हमारा मन परेशान करना थोड़ा सा बंद करेगा, जब हम कब कब करेगा, जब हम भक्तिमय सेवा में, जब कृष्ण की जो सेवा, उनकी जो गाइडेंस है जो हम लेते रहेंगे, तब अब ये परेशान करना बंद करेगा। तो वो 2 तरीके से है, प्रभु जी ने बताया कि जैसे बाहर के तरीके से हमारे जो श्री गुरु है, जो हमें कहेंगे, जो हमें बताएंगे, उसे फॉलो करना एक वो। और हमारे हृदय में जो हमारे बैठे हैं गुरु, जो कृष्ण के रूप में है, जब हम उन्हें सुनेंगे तब होगा। यस प्रभु जी।
So Krishna said, abandon all varieties of religion and surrender to me. You see, it's a simple, I think one of the more simple instructions you ever heard God saying in any scriptures in the world, but it's so beautiful. It's beautiful. And Prabhupada is saying here, when the heart is pure, Krishna will guide you from within and without. Krishna guide you from outside and inside. Dadami Bhujan. You see, Prabhupada is reinforcing this. So we want a guidance. We want the intuition, but we want to guide the intuition that it comes properly. So our life becomes, I'd say, a shine example of Krishna advancement in Krishna consciousness. ओके, तो प्रभु जी ने बताया कि भगवत गीता में जिससे कृष्ण भगवान हमें कह रहे हैं कि सारे ही धर्म चीजों को, मतलब इन सारी चीजों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ। तो ये बहुत ही एक इजी तरीका है जो भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, और भगवत गीता में हमें ये जानने को मिलता है। और प्रभु जी ने बताया कि बाकी और ऐसी कोई धर्म की बुक नहीं होगी जिसमें इतना क्लियर कोई इंस्ट्रक्शन भगवान स्वयं कह रहे हैं। बहुत ही इजी तरीके से इसे हमें समझना होगा। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हमारा हृदय अगर 100% अगर पूरा शुद्ध हो जाएगा, तब हम इन सारी चीजों को समझ पाएंगे कि कृष्ण हमें बाहर से और अंदर से हमें क्या कहना चाह रहे हैं। और वो फिर एक अगर इन सारी चीजों को अगर सही तरीके से हम समझेंगे, चलेंगे, जब पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा, तब एक अलग ही तरीके से एक हम शाइन करेंगे भक्ति में। यस प्रभु जी। So I thank you much. Thank you all for coming in this small podcast. It's podcast of happiness. So anybody has a question, now is the time. But before that, if anybody wants, send me feedback. You write. What do you take from this? How do you understand? You write it. So we can now see when you make advancement, you want to write your advancement. You remember this in the future. It's good for you. Okay. So you write me a feedback. I think Keshavi Subhan should always write feedback in there. Thank you so much. It's nice to hear. So any question now, that's a good time to ask about the white wolf and the black wolf. Hare Krishna, Prabhuji. Yes. I have a question. Yes, who is there? Let me put you here. Let me see how to put you here. Oh, who is that? I don't see you. Oh. The name. Yeah. Plain preach. Neha. Okay. No, but I don't see here. Okay, yeah. I'm not very techy. Okay, tell me. So, Prabhuji, sometimes our mind take over us through emotions, especially anger. So, how to control it? Okay. The mind takes over. Well, first, don't put yourself in a situation that your mind will take over. Through You emotions understand? like anger. I know. But if you see, they have a thing in the police force nowadays, because everywhere you don't need Hindi, right? We can do all this in English. Yes. You in the police force now, particularly in America, they have this what do you call video because people complain about police everything. But one thing the police are learning is to deconflict, not to the situation get out of control and there is shooting each other or a big fight. You see, they learn to deconflict, how to bring down the temperature of a particular situation. So you should know yourself to a point that, I'm getting angry or this is going to make me angry. Okay. And you learn to not get to a boiling point that you get out of control. So see, there is a game theory that they say sometimes the best way to play the game is not to play the game. They do these things about, missiles from here, from China, Russia, America, they're doing all these games called the war games. And they come to the conclusion that in this situation, it's better not to play the game. That's winning the game. You see, because either way you play, you lose. You see, everybody loses.
So you have to keep this in mind. The best way is do not play the game of anger, the game of being out of control, by being always in control. You see, this is the whole point of a yogi. We're yogis. You see, you may be a student yogi. I may be Dadu yogi. Somebody may be, Mataji is a preaching yogi. You see, everybody is a yogi in this process. We are doing bhakti yoga. You see, so it's imperative we learn to control this. But yeah, sometimes we fail. We go back, we do the post-mortem, means why happened that I lost my control. You study again, you rearm yourself, go to the next phase. If you go again down, you get anger. Again, why these things make me angry? So you start studying yourself, and you never let you go to a position that you lose your anger, you lose to anger, because anger is very destructive, I see sometimes the police report, because there's a lot of things from American here in my feed, and the guy got angry, he pulls the gun, and shoot other guy. Now I'm thinking, this is a young kid. He took the gun, so much arrogance. The mind is out of control, right? But now this kid is going to, be like 20, 30 years in jail. His life is practically over. You see, for one moment of anger. So the best is not to play the game. Do not put yourself in a situation that you lose control. And I tell you, daily, there's a lot of things to make you angry, but you always focus in one person. Who is that person? Krishna. Close, but not really. I wanted something more close. Who is that person? Okay, I'll tell you. It's Haridas Thakur. Haridas Thakur, he was beating. What about offending him? He was beating in 21 marketplace, and they took right here, right around here somewhere. They took him in different markets. They beat him up. And you know how he solved the problem? Because they beat him up, they take to this market, they beat him up, In the 21st marketplace, the people, the guards of the king, they're crying. Said Haridas Thakur, why are you crying? What happened? Well, we're supposed to kill you, don't die. You don't die. You see, no, the king, is going to be mad at us. Oh, is that a problem? Okay. Morigacho. They throw him in the river. He floated a little bit. He came out. He wanted to chant his holy name. You see, Haridas Thakur. I love Haridas Thakur. It's amazing. So, Trinarapi Sunisena. You see, it is a beautiful example for us to do what? To be very tolerant and humble. You see, yes, Arjuna, he was fighting. He was a kshatriya. He was fighting for a cause under guidance of Krishna. You see, that moment, yes, we have to fight, get angry, like Hanuman. He got angry and he burned Lanka. You see, because he was offending Lord Rama, and they took Sita. He was chastising everybody. But that's a different story. He was powerful and he has no anger issues. He was just, making justice for Lord Rama. You see? So we have to have a posture that we become very tolerant of these things. Because once you advance in devotional service, many people try to stop you for different reasons. Some of them, they envious. Some of them, they try to test you. This is not real. So they poke you here, they poke you there, one time, I was preaching. I was brahmachari. Yeah. Mataji is not going to get this. I was brahmachari. See? And I was distributing books, and these young punks, kids, students, sorry, no offense, and they come and they poke me, and I got a little angry and immediately point the finger. You angry. Sadhu not supposed to be angry. It was a trap. You see, look at that. You see, and this is, we have to be tolerant. People, at least to yourself.
Don't get into this chi in the material world. You'll be above it. Okay? And people will offend you in so many ways. So many offenses, But you're not this body. How much they can offend you anyway? You're not this body. That's all the things they say about you, this and that, it goes to your body. You put in the earth, and that's like an electric wire going to the earth, take all the electricity down. Let it go. Don't be one more of the boxes in the shop of the guy there, the mechanic guy, one more. Every day you put one container with all these little things, unresolved issues of the heart, and you have your mind full of little containers of unresolved issues. At one point, Krishna said, hey, I cannot be here. There's no place for me. Where am I going to stay here? The mind is full of so many things. Oh, this grievance, that grievance. Where are you going to stay here? Krishna needs a clean place to be. You see? So this is devotional service. You fight for your devotion. And one of the fights is to control yourself to the best your ability. If it goes a little bit over the top sometimes, you go back, you do a post-mortem. Why I got so angry? What is this in my heart? Why I get so upset? You go there, you analyze yourself, and that is a yogi growing his spiritual potence. You see? And people in the world, anywhere, they get angry, they blow up, they beat each other. They're not thinking, what should I do? How should I control my anger? They're actually proud of their anger. Particularly the Bengalis, I tell you. When they get angry, oof. No, I get away. No, I don't want an angry Bengali after me. No, I'm always humble, man. My philosophy is, not just Bengalis, Indians, there's one of me and there's 1 billion of them. They never upset anybody here. That is it. I have stories I can tell you another time that, in 1 minute, there's a whole mob, oof, you gotta be smart. Okay? So you be deconflicting. Don't let the thing get out of control. That's how you control the thing. Okay? Any questions? Is that good? Huh? Yes, Prabhuji, Prabhuji, I please have one question. Was good? Yes? Keshavi? Yeah. So my question is, many times we heard this, what Srila Prabhupada says, if we accept this Krishna consciousness movement in our life, so it saves us from the greatest danger. I want to know, my question is what is that danger? Actually, we don't know what is that danger. The danger. Oh. Yeah. The first danger is to forget Krishna. That's it. That's number 1 danger. Okay? That you forget Krishna. So, say again, if you accept Krishna consciousness, you'll avoid the greatest danger, right? Yeah. Yeah. So the greatest danger, you forget Krishna. Because I tell you, even one God brother that I know, I think he got some problem, maybe relationship problem, wife left him or something. He gave up all his books, all his daily paraphernalia, everything. He became a Christian because he's thinking, why Krishna would let this happen to me? He's thinking Krishna did it. You see, that is a no. I always like to be a little independent because if I get to a situation, I'll blame myself. I won't blame Krishna because I'm a little independent, you see. But I'm always like for Krishna, please keep me in devotional service, keep me in association. All right? Because you do not know. Your heart will be in pain and you think Krishna caused this pain. This person I love so much, relationship or, so maybe you'll be, like a father, mother, brother or something, I don't know. And, a person will blame Krishna, blame God. How God could let this happen? Now, this happened a lot with the Christians. See how some good people had to die for some, this stupid thing, some guy blows something and a lot of people die. You do not know.
You do not know how these things are happening. You see, we just trust the will of the Lord, which is hard in this circumstance because you don't see the mechanics behind or why these things are happening. You see only the result. And the result don't give much clue how this happens, and now we're suffering. You see, so we have to be strong to be able to be in the position of spirituality to see these things. It's very important. Otherwise, the mind will use that and go to the black wolf. You see, the black wolf will be telling you, yeah, you see, I told you that all this Krishna, all these things, And the white wolf, he cannot say anything, listen to the white wolf, what are you going to say? You see, so you have to be careful, you see, to be accepting Krishna. Well, I tell you, I'm not saying this because it's fun. I've been positioned in my life that the black wolf was almost, swallowing me alive. But I just, I just won't go for it. I can never blame Krishna for the things that happen to me. I like to take full responsibility for the things that happen to me. Because Krishna is not there to get you. That I can tell you 100%. Krishna is not there to get the devotee, to chastise the devotee. Krishna don't want to chastise anybody. You see, he got Sisupala. Sisupala was 100 offense to Krishna, very bad. Kshatras, one offense is, they go fight to death. And he 100 things. He's telling all kinds of things that Krishna was quiet. Because he told his mother, I'll tolerate 100 offense, but 101 Sudarshan Chakra. You see, because that's too much. You see, but we tolerate. You see, we tolerate. Okay, so you have to be careful. Okay. Thank you. There is one chat there's one message in chat box. Yes. From Niharika. Yes. Niharika, is she new? Mata, are you new? Niharika? Hare Krishna, Prabhuji. I had attended your 3 lectures. Okay. Hare Krishna, Prabhuji, please accept my humble obeisances. This section beautifully explains the difference between heart calling and this thing here, and the brain winds. Heart calling guides us with clarity in a peace, while the brain winds arise from the restless thoughts and temporary desires. The lecture was simple, meaningful, and spiritually uplifting. Thank you for such a wonderful guidance. Thank you, Mata. I appreciate. Beautiful. You took time to write all these things. You're busy. Don't worry. This is the white wolf writing. Don't worry. It's very good. Thank you. I like the story of the wolf. So, any more questions before? Oh, I'm sorry, Neha. I'm sorry. My fault. She's there. She's just a wolf, not black, no white. Just a wolf. She's a tiny wolf. Okay, so thank you very much. You can please write a little feedback that Mataji Niharika Mataji wrote. Thank you so much. And I take my leave now with your permission. Please bless me. I can keep giving this small podcast from the heart. Okay. Hare Krishna. Thank you. Gaura Pramanandi. Hare Bol. Hey, coming to Korpunima. It's time now. Yes. Start thinking. Thinking is like coming here. Hare Bol.